students. Today we are going to start our chapter number 2, sports and nutrition. In this chapter we are going to concentrate on two topics. First thing is balanced diet, second one is nutrition. अगर देखा जाए तो so many people are always confused between balanced diet and nutrition, but what is the deep knowledge about those things and what is the exact difference between both the things we have to know through this chapter. In general, when we talk about balanced diet, a proper balance of carbohydrate, protein, fats, fibers, vitamins and minerals and even water also is in our daily food consumption of diet. Basically, balanced diet is a kind of diet which is necessary for child to the old person, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग. Each and every one of us have to take proper balanced diet. But when you talk about nutrition, nutrition is a particular type of food product or compound of diet which is the best for enhancement of performance. Basically, nutrition we are going to take when we want to increase our performance in our sports field or in other activity. Now next, we are going to talk in detail about balanced diet and nutrition. Balanced diet is a mixture of carbohydrate, protein, fat, fiber, vitamins, minerals and even water. But when we talk about nutrition, we are talking about any particular type of nutrients. Like carbohydrate is a different kind of nutrient, protein is a different kind of nutrient, fat, fibers, vitamins and minerals, these are the part of nutrients, and when all these nutrients come together, then these nutrients combinedly called as a balanced diet. Clear? Now, next, meaning of nutrition. It is a basically science of food. कि किसी फैट पर्सन को, जैसे हमने कई बार देखा हुआ है कि जब भी हम किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, then doctor suggests that those people that you already having enough fat in your body, then you have to reduce your fat intake. At that moment, that particular dietitian or a doctor are suggesting to reduce some kind of nutrients from their particular diet on a daily basis, because if that person is already having fat and if that person is already is taking fat again and again, then he is going to be obese position. इस पोजीशन से बचने के लिए we are just minimizing or reducing the amount of fat that whose that fellow is taking in their diet. Now next, it study how food affects the body and provides energy. Now हमें ये जानना है कि which kind of food products gives us energy and which kind of food products gives us nutrients for curing from so many deficiency diseases. उसके बारे में हम nutrition के अंदर जानेंगे. Just like it is an overall process in which food is ingested and digested. Its nutrients absorbed and distributed into the various system of our body for smooth functioning. हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट थिंग इज बैलेंस डाइट, सेकंड वन इज न्यूट्रिशन. जब हम बात करेंगे दोनों को तोड़ेंगे तो बैलेंस डाइट जो है हमारी डेली लाइफ के रूटीन को वर्क करने के काम आता है, और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काम करती हैं. And even nutrients is also divided into two kinds. First one is macronutrients and the second one is micro one. Why it is called macro? Because we have to take these nutrients in the large amount, just like carbohydrates, protein, fat and water. And for giving a better example of this, just like chapati what we eat, rice what we eat, is the basically simple example of carbohydrate. When we talk about protein, we having so many pulses, we having even some people are taking non-vegetarian for getting protein from it. Next one is third one is fat. Fat is the amount which we are taking in the form of oil, ghee and other some food product we are getting fat. And water. And for digesting all these things like carbohydrate, protein, fat, for digestion water is very necessary, and it is already based on the daily value what we are intaking. Clear? Now next we are talking about micronutrients. Micronutrients basically minerals. The 4% of our body weight is made up of minerals, जिसमें आपको रहेंगे potassium, sulfur, calcium and so many kind of minerals are there. Even iron, chromium, copper, these are the things which will comes under minerals. And the second one is micronutrients, that is vitamins.
And vitamins also distributed into two categories: fat soluble vitamin and water soluble vitamin. The fat soluble vitamins are A, D, E and K, and the water soluble vitamins is vitamin B and C. See, fat is also necessary for our body. अगर आप सोचे कि मुझे फैट की ज़रूरत नहीं है, and we are reducing the fat from our daily diet, or even removing fat from our daily diet, at that position we are going to suffer from so many kind of deficiency diseases which is related to vitamin D, A, E and K. So for saving our body from these kind of deficiencies, we have to take a minimum amount of fat, because this kind of fat is always dissolved or soluble in fat only, and it is absorbed only because of our fat. And if we are not taking fat, then these kind of vitamins are not absorbed through our body. The last two varieties of vitamins are vitamin B and C. It is a basically water soluble vitamin. Why it is water soluble vitamin? Because these are the kind of vitamin which will burn in heat. अगर आप इन vitamins को अगर burn करेंगे तो वो heat में destroy हो जाते हैं. It is not like vitamin A, D, E and K, but vitamin B और C जो है heat में burn हो जाते हैं. Now we are going to talk about those nutrients individually, how they are made up of, what is the use of those nutrients, and what are the kinds, and in which kind of varieties we are able to find those kind of nutrients. We are going to start from carbohydrate. Carbohydrate is also known as the primary source of energy. In carbohydrate, single molecule consists of carbon, hydrogen and oxygen atoms with a ratio of 2:1, just like water. Clear? Now next, basically in this thing we are talking about its structure, how that particular molecule is made up of. इसमें कार्बन 2 होंगे और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन की मात्रा होगी 1. Now next, carbohydrates are organic compound which is also called as a primary source of energy, and around 45 to 65 of the energy comes from carbohydrate. Whatever the daily requirement of our energy, almost 45 to 65% that energy comes from that particular carbohydrate food what we intake. Now we are going to talk about the categories and the kinds of carbohydrate. For that we are just going to the next slide. Forms of carbohydrate. First form of carbohydrate is simple carbohydrate, and the second one is complex carbohydrate. In both the carbohydrate, only the difference is that the molecules of carbon and hydrogen is closer to each other or far away to each other. If the molecules of carbon and hydrogen are composite together, in that case that carbohydrate comes under complex one, because उसको break करना थोड़ा मुश्किल होगा. And if the molecule of carbon and hydrogen is far away from each other, and the quantity of water, quantity of hydrogen and oxygen, or we can say water, is much as compared to carbon, and that condition we are going to talk about simple carbohydrate. हम उसको example से भी जानेंगे. First of all we are going to read about such things. Simple carbohydrate, these carbohydrates are formed by smaller chain. They are formed in crystalline form, water soluble, and give food sweeter taste. The example are glucose, fructose, galactose, sucrose, maltose and lactose. बेसिकली अगर आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है, जस्ट लाइक वी ऑलवेज सीन, हमको मार्केट में मिलता है ग्लूकॉन डी. इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. उसको इनटेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? वी जस्ट हैव अ स्कूप ऑफ दैट ग्लूकॉन डी एंड जस्ट डिजॉल्व इट इनटू द वाटर. इट डिजॉल्व्स इन इट. दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. वो जो ग्लूकॉन डी है, जो ग्लूकोज से पानी में घुल के हम उसको तुरंत पीते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी एब्जॉर्ब भी होता है हमारे बॉडी के थ्रू. बट ये चीज़ किसके साथ पॉसिबल नहीं है? व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दे आर ऑल्सो known as polysaccharides, which are formed by long chains such as starch, dextrin, glucogen and cellulose. Just for taking an example, if we try to dissolve a potato or chapati in a water, it will take a lot of time, only because the molecule of carbon is much higher than the water. In that condition, we put that carbohydrate into the complex one, because the atoms and the molecules of carbon are in much higher amount in the
in this complex carbohydrate chain. And if we talk about the examples of simple carbohydrate and the complex carbohydrate, all such kind of food product which is formed in a liquid state. Just like for an example of glucose, जो आपको पता है कि a form of glucose we just dissolve it into the water and just drink it. Fructose. There are so many kind of fruit juices are there. It is also contain a lot of carbohydrate and it is having a sweeter in taste. Galactose, saccharose, maltose and lactose, these are the components which we can found in milk product. These are always found in a simple form. We just have to drink it for taking energy from these products. But when we talk about complex ones, when we can talk about complex one, we have to eat it. First of all, we have to break down their molecules by our teeth, like chapati, rice and other food product. We have to eat it for making them simple. उसके बाद ही वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जा करके आराम से उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है. बट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या था? वी जस्ट हैव टू जस्ट ड्रिंक दैट पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट और ड्रिंकिंग प्रोडक्ट, देन वो जाकर के डायरेक्ट आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी देते हैं. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज शोन इन द एड्स. यू जस्ट हैव टू जस्ट ड्रिंक द ग्लूकोज एंड इट विल प्रोवाइड यू एनर्जी इन इंस्टेंट ऑफ मिनट्स और इंस्टेंट टाइम. But when we talk about complex carbohydrate, these are the components what we can chew. The better example अगर आपको समझना है, these are the best example of simple carbohydrate what we drink. ठीक है? And for the complex one we have to chew, because जब तक हम इसको चबाएंगे नहीं वो आपके पेट में जाकर के absorb नहीं होगा. And because of that we will face some kind of indigestion problem because it is not converted into liquid state. Finishing this carbohydrate, we are just going to talk about next nutrients. This is called protein. Protein is actually also called as a building block of our life because our body is totally made up of protein, because each and every single part of our body is having cells and tissues, and for that particular cells and tissues is only made up of protein itself. Now protein are those substances that have carbon compound, hydrogen compound, nitrogen compound and oxygen compound, and sometimes sulfur, phosphorus and iron. Our body is having an ability to convert them into amino acids. Now basically protein हमारी बॉडी में जाकर के अमीनो एसिड्स बनाता है, एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दैट अमीनो एसिड्स इट विल ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत या मसल्स को एनर्जी, मसल्स को स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी हमारी डिस्ट्रॉयड मसल्स होती है उसको रिपेयर होने के लिए प्रोटीन मदद करता है. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स आउट ऑफ विच 9 अमीनो एसिड्स मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड व्हाट वी ईट. There are 20 amino acids what our body requires, but out of which 9 amino acids must be obtained from food what we eat. लेकिन उस 20 में से 9 अमीनो एसिड्स के हमें फूड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. एंड व्हाट आर द थिंग्स फ्रॉम विच वी कैन गेट प्रोटीन? फॉर वेजिटेरियंस वी जस्ट गो फॉर द पल्सेस. जितने भी हमारे दालें हैं वो एक तरह से हमें प्रोटीन देती हैं. एंड देयर आर सम काइंड ऑफ वेजिटेबल्स ऑल्सो जिसमें बोला गया है कि उसमें भी कुछ परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, जस्ट लाइक आपका ब्रोकली हो गया. नाउ नेक्स्ट, इट फॉर्म्स प्रोटोप्लाज्म एंड इट इज फाउंड इन मैनी फिजियोलॉजिकल पार्ट्स लाइक ब्लड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बोन्स, टीथ, टिश्यूज एंड एक्सेट्रा. As I told you earlier, each and every single cell, each and every single body part is made up of our protein. That's why we have to take protein in a regular basis in our daily routine, daily diet. After finishing this protein, we are going towards next nutrient, which is called fats. Fat is also called as a lipid. That's why we always heard about some doctors and other persons that we are just going for the checkup for checking the lipid profile. That lipid profile is actually they're talking about fat profile, that how much fat they already having and how much the requirement of fat they are. उसकी वे अपने lipid profile बनाते हैं. So now we are going to talk about fats as a part of nutrition. Now
Fat are composed of the elements of carbon, oxygen and hydrogen. Just see, if we talk about carbohydrate and fat, both the nutritive component is made up of these three things: carbon, oxygen and hydrogen. जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था, कार्बोहाइड्रेट में भी सेम यही तीन कंपोनेंट्स थे, कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था. बट इवन इन फैट ऑल्सो ऑल दोज थ्री थिंग्स आर देयर. बट इसमें ये बात हमें ध्यान रखना है दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन. अगर हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करी तो उसमें रेशियो था 2:1, 2 रेशियो ऑफ कार्बन एंड 1 रेशियो ऑफ H2O. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फैट्स, फैट में ये रेशियो चेंज होकर हो जाएगा 76:12:12. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू जस्ट गो टू ऑयल. ऑयल को आप देखेंगे उसमें जो लिक्विडिटी रहती है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर. वाटर की लिक्विडिटी कैसी होती है लाइक H2O की, इट इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक इन अ फ्लो. बट ऑयल का क्या है, वो धीरे धीरे बहता है. ऑल बिकॉज ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स व्हाट इट कंसिस्ट, दैट इज द रेशियो ऑफ 76. Now after knowing about the ratio of carbon, oxygen and hydrogen in fat, we are going to talk about fat, the other uses of fat. Fat are also called as a secondary source of energy. Which is our first source of energy? That is carbohydrate. Then नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जब आपका पूरा बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट पूरी कैलोरीज जब बर्न हो जाती हैं उसके बाद ही हमारी बॉडी में से फैट बर्न होना शुरू होता है. इफ एनी पर्सन वांट टू रिड्यूस देयर वेट, they just have to reduce the amount of carbohydrate what they were taking in a daily life, because if they are taking less carbohydrate, then at that time the residual of the fat which is stored in their body, it is going to burn. बिकॉज पहले जब आपका कार्बोहाइड्रेट बर्न हो जाएगा पूरी तरह से टोटली खत्म हो जाएगा, उसी के बाद ही आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी शुरू होगा. दैट्स व्हाई फैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ फैट इज रेगुलेटेड द बॉडी कोर टेम्परेचर, boost hormones productions and also protect internal delicate organs too. Now fats का basically use क्या है? First use तो हम already जान चुके हैं. It is a component in which we can dissolve vitamins, vitamin A, D, E and K. These are the 4 kinds of vitamins which is only dissolved in fat. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. But other importance of fat is it regulates the body core temperature. बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए आपको फैट की जरूरत पड़ती है. दैट्स व्हाई इट इज सीन इफ व्हेन फैट पर्सन इज रोमिंग अराउंड इन विंटर सीजन, दे विल फील लेस कोल्ड एज कंपेयर टू द स्किनी पीपल, बिकॉज स्किनी पीपल के पास दे आर नॉट हैविंग फैट इन देयर बॉडी टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ वार्म, कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ वार्म. सो थर्ड इंपॉर्टेंस इज फॉर मेंटेनिंग द कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. सेकेंड वन इज बूस्ट हार्मोन्स प्रोडक्शन. जितने भी हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स काम करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसको भी मेंटेन करने का काम किसका होता है? फैट. एंड आल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स टू. जस्ट लाइक इफ वी सी अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर, इन दिस स्पेस वी आर नॉट हैविंग बोन्स, एट दिस स्पेस वी नॉट हैविंग बोन्स. लाइक स्टमक इज देयर, pancreas is here, liver is here, but it is safe because of fat what we are stored here. जब भी कभी कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो जो इम्पैक्ट हमारी बॉडी को पड़ा वो कौन एब्जॉर्ब करता है? द फैट विच इज स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट. एंड फॉर लंग्स वी हैविंग रिब केज. इस तरह से जहाँ पर भी हमारी बॉडी में बोन्स नहीं है, फॉर द सेफ्टी ऑफ अवर ऑर्गन्स, उस जगह को फैट कवर अप करता है ताकि उसके भीतर जो भी हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, वी कैन कीप दोज ऑर्गन्स सेफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इम्पैक्ट. Now, next, fat are also necessary for the absorption of vitamin A, D, E, and K and carotenoids. As I told you earlier, why fat is necessary in our diet? Because of that. If we are not taking fat in a particular amount, then these kind of vitamins, which is very essential for our body functioning, I am repeating, these kind of vitamins is basically extremely necessary for our body functioning. If we are not taking proper amount of fat, we will suffer some kind of deficiency diseases which is related with vitamin A, D, E and K.
and even also carotenoids. Now last one, fat also recommended that 20 to 35% of our daily energy requires should come from fat. As I told you earlier, when the amount of energy what we are getting from carbohydrate, it is used. It is used, and after that our body is only and only depend on fats. Whatever the fat is stored in our body, we have to depend on that energy. After knowing about these things, we are just going to revise it once again. First, we already talked about balanced diet. Balanced diet is a combination of carbohydrate, protein, fats, water, vitamins and minerals. When all these components come together, it is converted into balanced diet. But when we talk about particular nutrient, when we talk about particular nutrient, just like if you are talking about carbohydrate is a nutrient, protein is an individual nutrient, fat is an individual nutrient, vitamins is an individual nutrients, minerals is a individual nutrients. Basically, when we talk about the science of those particular nutrients, then it will comes under the nutrition. But when we talk about balanced diet is a mixture of all these components which is necessary for each and every one of us. Clear? Now, but when we talk about nutrients, just like if we talk about the person who are having working hours of 12 to 13 hours a day, and if we talk about a sports person, and if we talk about a person who always living a sedentary life and they are not having any work to do, so most of the time if we see in that आपकी जो भी वर्किंग कंडीशन है उसके हिसाब से ही आपकी डाइट प्लान होनी चाहिए. इफ वी आर नॉट टेकिंग दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर बैलेंस डाइट, दैट मीन्स वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि हम कौन सी चीज़ को ले रहे हैं और कौन सी चीज़ को हमें हटाना है रिलेटेड टू आवर डेली रूटीन वर्क. जैसे कि वी टॉक अबाउट एथलीट्स और प्लेयर्स, उन्हें अपना डेली रूटीन वर्क भी करना है, उनको भी काम पे जाना होता है, इवन उसको टाइम निकाल के अपनी प्रैक्टिस भी करनी होती है. एट दैट मोमेंट दे हैव टू टेक अ लिटिल बिट लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डिपेंड करता है कि उनको फैट कितना लेना है. इफ दे आर द रेसलर्स एंड इफ दे आर द बॉडी बिल्डर्स, उनको फैट की मात्रा कम करनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड लेना पड़ेगा फॉर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट एंड लिटिल बिट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन इज ऑल्सो कंपोनेंट विच इज द थर्ड फेज विच विल प्रोवाइड अस एनर्जी. फर्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड फैट्स, उसके बाद आएगा प्रोटीन. नेक्स्ट हमने बात करी थी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स की. तो उसमें फर्स्ट पार्ट था आपका कार्बोहाइड्रेट विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर दोज काइंड ऑफ कंपोनेंट्स जिसमें मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है. इनको अगर लेमन टर्म में अगर हम जानें, लेमन टर्म में अगर हम समझें, जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा पाई जाती है, दोज काइंड ऑफ कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट. जिसमें लिक्विडिटी बहुत ही नहीं के बराबर होती है, जस्ट लाइक चपाती, राइस, इसमें लिक्विडिटी ऑलमोस्ट होती ही नहीं है, बट उसमें फिर भी एक तरह की एक नमी होती है जिसकी वजह से हम उसको रोटी और चावल को फोल्ड कर पाते हैं. only because the amount of carbon is in much amount as compared to water. So see, this is the simple difference between simple carbohydrate and complex one. और layman term में जाएंगे तो हम जानेंगे कि जिस भी चीज़ को हम पी सकते हैं, जो पीने के बाद ही हमें एनर्जी दी, दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट्स कम्स अंडर सिंपल कार्बोहाइड्रेट. और जिस चीज़ को खाने के बाद हमें कुछ देर के बाद एनर्जी मिलती है, दोस थिंग्स कम्स अंडर द कॉम्प्लेक्स वन. ठीक है. नेक्स्ट आपका था प्रोटीन. व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर लाइफ because each and every single body part is made up of cells. From tissues to cells to your whole body structure is made up of cells. Basically, protein is responsible for making amino acids in our body, in which we require 20 amino acids, out of which 9 amount of protein, what amount of amino acids we have to take from external source. दैट मीन्स जो 11 अमीनो एसिड्स होते हैं वो तो हमारी बॉडी खुद ब खुद बना लेती है, बट उसके बाद भी 9 अमीनो एसिड्स के लिए हमें आउटर और एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. इसका हमने एग्जांपल दिया था व्हेन वी टॉक अबाउट द वेजिटेबल साइड्स, पल्सेस, जितने भी तरह के पल्सेस हो गए, सोयाबीन हो गई, जितनी भी तरह की चीज़ें हो गई, और सम काइंड ऑफ वेजिटेबल्स वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इन दिस वीडियो बिफोर. From that kind of things we are getting vegetable sources of
प्रोटीन एंड द अदर साइड में होता है एनिमल प्रोटीन्स. अदर साइड में क्या होगा? एनिमल प्रोटीन्स, जस्ट लाइक मीट and other sources of protein. Just like if we talk about dietary products also, from dietary products also we will get a bit amount of protein from that. But the main thing we have to keep in mind while we are talking about protein, whatever the pulses and vegetable sources are there, we are getting almost if there are little amount of fat in there. But when we talk about animal protein, we are getting a much more amount of fat from that also. So we have to just keep that in mind, how we are going to cook, how we are intaking that particular amount of category of protein. Now our next topic is fats. What is the need of fat? Because fat is also a necessary part of our body, because after finishing of the carbohydrate we have to depend only on fat, which is already stored in our body. The role of fat is it maintains the body temperature, it helps in absorption of vitamins and minerals also, and also helpful in some kind of glandular functions also. That's why we need fat in our diet. And if we are not taking a proper amount of fat in our diet, I'm not talking about the excess amount, I'm talking about the proper amount, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है for performing all these kind of functions, उतना फैट तो आपको लेना ही पड़ेगा. एंड इफ वी आर नॉट टेकिंग फैट इन अवर डाइट, at that situation we are going to suffer from some kind of deficiency disease which is related with vitamin A, D, E and K. So for today's class that's it. आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Stay safe, stay and stay study also.